Well, so now we'll be doing some applications of Bernoulli's theorem. We have seen the Bernoulli's theorem gives this statement that the sum of three quantities P plus half rho V square plus rho GH, these are constants at any two different points. ठीक है? Now I need to tell you something. थोड़ा ध्यान से सुनना इसे. We, according to Bernoulli's theorem, P plus half rho V square plus rho GH is equal to constant, right? अब देखो ये सारा quantity, if you go for a dimensional analysis, all the quantities will have a dimension m a to the power -1 to the power -2. क्यों? देखो सारा प्रेशर है, सारा प्रेशर का डायमेंशन है, राइट? नाउ इफ आई डिवाइड ऑल द क्वांटिटीज बाय रो एंड जी, रो और जी तो कांस्टेंट है ना, वो डिफरेंट पॉइंट में चेंज तो नहीं करेंगे, तो रो और जी से अगर डिवाइड कर देते हैं तो p बाय रो जी प्लस हाफ v square by g plus h equal to कांस्टेंट होगा. इसमें सारा टर्म का डायमेंशन क्या होगा बोलो तो? आंसर भाई, बिकॉज़ h जो है वो हाइट है ना, तो हाइट मतलब क्या? इट इज अ लेंथ. तो अगर ये लेंथ है तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बताता है कि इसके साथ जो भी ऐड किया जाएगा उसका भी लेंथ होना चाहिए. तो ऑल these quantities has got the dimension of length. That's why these quantities have got some names. We call them, this one is called pressure head, this one is called kinetic head and the velocity head, and this is called gravitational head. अब ये हेड का कांसेप्ट है क्या? हेड का कांसेप्ट ये है, देखो क्यों इसको हेड बोला जाता है. Whenever fluid flows, say you are making a piping system for your whole house. Say there are 3-floor house, and in the 3 floors the pipes will distribute the water from the tank. So from the tank one pipe comes out and then distribution takes place everywhere, right? So when the distributions are taking place, more the number of bends that takes place, the speed of water goes on decreasing. Why does it happen? Because every bend acts as an obstruction to the flow of the liquid, and that's why the speed of the liquid decreases. Now when they go for calculating the number of bends, they create a head loss. Head loss means initially the whole liquid is flowing with this total energy, right? जिसमें a portion is pressure energy, another is kinetic energy, another is gravitational energy. But when we go for the same expression but in a different format, these quantities becomes the dimension of length. और ये length basically एक height के जैसे utilized होता है. Now say at any point if you open the pipe and create a vertical channel, so if you open up the pipe, you will see the water will rise to a certain height. जहां से वो गिर जाएगा, exactly like fountain. Fountain में देखो है, पानी ऐसे ऊपर चढ़ता है और फिर वहां से चारों ओर गिर जाता है. वो एक certain height तक गिरता है. अगर हम लोग वो पाइप में बेल्ट लगा देते हैं ना 2 या 3, तो वो जो हाइट तक पानी पहुंच रहा है ना, वो हाइट से वो कम हो जाएगा. क्यों कम हो रहा है? Because of the energy loss taking place at the bends. So that is called head loss. मतलब as if the liquid raised with its head up and now its head is coming down. That's what called head loss. Okay. अब actually if you add these 3 quantities, you'll get the total head of the liquid. मतलब if you open up a pipe in a vertical open position, it will rise to this much height and then fall down like a fountain. This height is the sum of these 3 heights. इसमें एक पोर्शन होता है फर्स्ट वाला, एक पोर्शन होता है सेकंड वाला और एक पोर्शन होता है थर्ड वाला. समझ में आया? इसीलिए उसको नाम दिया जाता है heads. Alright? This is not so very important when you are solving the problems, but the knowledge of liquid head or flow head is an important concept. इसीलिए मैंने ये डिस्कस किया है. सर ये लाइन बोलो ওই যে লাইন থেকে ছিল ওগুলোতে কি আছে? এই বেঞ্চ গুলো আছে না, লাইন গুলো বেঞ্চ নেই, মানে এই যে ফ্লুইডটা এতটা রাইজ করছে উপরে, তারপরে ফাউন্টেনের মতন পড়ছে চারিদিকে, তাহলে এই যে এখান থেকে এতটা উপর দিকে উঠছে, এই হাইটের ভ্যালুটা কত?
তো সেই হাইটের ভ্যালুটা কিন্তু h নয়, সেই হাইটের ভ্যালুটা এই তিনটার অ্যাডিশন। আচ্ছা ঠিক আছে, কি বলা বোঝা যাচ্ছে? ঠিক আছে, ঠিক আছে। আমি যদি স্পিডটা কমিয়ে দিই তাহলে হাইটটা কমে যাবে, হ্যাঁ, আমি যদি প্রেসারটা কমিয়ে দিই তাহলেও হাইটটা কমে যাবে, আর অবভিয়াসলি আমি যে হাইট থেকে লিকুইডটা ফেলছি সেই হাইট মানে ট্যাঙ্কের হাইটটা যদি নিচে করে দিই তাহলে লিকুইডের হাইটটা কমে যাবে। Right, right. So these are called the heads of the fluid. Alright? Yes, sir. Now the applications. The first application is velocity of efflux. Flux. কোনো একটা পয়েন্ট থেকে ফেললে তাহলে তোর হাইট কত হবে? বুঝতে পারলি? মনে পড়েছে? Velocity of efflux. Now what is velocity of efflux? Whenever you take some water in a container, so there is a tank and it is having placed on say a table and it is having water up to a certain level. Okay? So it is having water up to a certain level. And say we make a small hole at its bottom. Then what will happen? The water will leak out. So when the water leaks out, it will not just come out of it, but it will come out like a projectile and it will fall on the ground. So with what velocity does the liquid comes out from this hole? That is called velocity of efflux. Alright? The velocity with which the liquid comes out from this hole is called the velocity of efflux. Now what we are doing, we are choosing 2 points. One at the surface over here, point 1, and another just outside this fluid, just outside the tank. Okay, point 2. So if we apply the what? Bernoulli's theorem for both these points, 1 and 2. क्या मिलेगा हम लोगों को? First of all, see this area of cross section at 1. It's big, और ये hole का small. So A1 is much greater than A2. That implies V2 should be much greater than yes or no? V2 should be much greater than V1. Now, if we write down, say this hole is at a height of from the ground, it is at a height of H2, and this surface is at a height of H1. So if we apply the Bernoulli's theorem, P1 plus half rho V1 square plus rho G H1 is equal to P2 plus half rho V2 square plus rho G H2. Rho G H2. In this case, थोड़ा ध्यान से सुनो, ये जो point 1 है, it is open to the atmosphere. Yes. तो ये जो P1 है ना, ये P0 है. What is P0? Atmospheric pressure, right? P0 is the atmospheric pressure. Plus half rho V1 square plus rho G H1 is equal to P2. Now P2. This point 2 is also just outside the tank. हाँ 76 centimeter of mercury. So just outside, if we take in the same second point which is just outside the tank, that is also open to the atmosphere. हाँ yes. तो वहाँ पर जो pressure है वो भी right, the atmospheric pressure. So you can cancel that off from both sides. हाँ या ना? Now we are supposed to find out V2, right? So I'm just taking V1 square on the right hand side and bringing H on the left hand side. So I get rho G H1 minus H2 equal to half rho V2 square minus rho and rho gets cancelled. Sorry. Rho and rho gets cancelled. अब मुझे बताओ, अगर V2 is much greater than V1, can I say V2 square minus V1 square is nearly equal to V2 square? क्योंकि V2 बहुत बड़ा है, V1 बहुत छोटा है. So V2 square minus V1 square is nearly equal to V1 square. जैसे मान लो 100 square minus 1 square, तो obviously वो 100 square के नजदीकी हुआ बहुत. So what we can do is G H1 minus H2 is nothing but the height of the water column or depth of the water column from the surface to the hole.
फ्री सरफेस से होल तक कितना हाइट है, वही h है ना, and this h is nothing but minus, right? So this is gh, ये 2 को इधर लेके आते हैं, is nearly equal to v2 square. So v2 is equal to under root of right, free falling body equation. Free falling body, हाँ? Exactly, free falling body এর জন্য exactly same. টরিসেলি কি একটা বলে না এটাকে Torricellian height. हाँ. ওটা অন্য জিনিস, ওটা actually pressure calculation से लगा. Okay, the next application is venturimeter. What's a venturimeter? A venturimeter is a device that measures the speed of fluid flow through any pipe or any cross-sectional area. So what happens in that? You have a section of the meter like this, which narrows down to a smaller cross-section at a. Don't draw this, okay? Until I tell you to do so. And so it is the exhaust pipe. Now say अच्छा इन दोनों का actually same होना चाहिए. तो हम इसका ना भाई See, थोड़ा ध्यान से पहले सुनो कि ये क्या हो रहा है. This is basically a section which is connected to the pipe through which the water is flowing. Say water is flowing through a pipe, you take out the one end of that pipe and connect it to this venturimeter. And by knowing the level of liquid at different points 1 and 2, you can find out the velocity of fluid. फाउंटेन नहीं, हम लोग ये पाइप्स का साइज जो है ये चेंज एडजस्ट कर सकते हैं, राइट? ये पाइप एडजस्टेबल साइज का होता है ताकि कितना हाइट तक वाटर जाए, बाहर नहीं निकलना चाहिए. एक मजेदार बात है, सुनो, वेलोसिटी अगर ज्यादा होगा ना तो कभी भी बाहर नहीं निकलेगा. क्यों नहीं निकलेगा? बहुत बोल रहा है. वेलोसिटी ज्यादा होगा तो उसका प्रेशर कम ना हो जाएगा, तो प्रेशर कम होगा तो बाहर लिक्विड ऊपर कैसे जाएगा, तो नीचे आ जाएगा ना. समझा? अच्छा, यहाँ क्वेश्चन ये है कि वेलोसिटी कैसे मेजर किया जाएगा. ठीक है, मान लो हम लोगों को या तो v1 या तो v2 कोई भी एक वेलोसिटी मेजर करना है, तो मुझे पहले देख के बताओ कि कौन सा वेलोसिटी ज्यादा होना चाहिए, 1 या 2? बिकॉज़ क्रॉस सेक्शन एरिया छोटा है ना. इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी a1 v1 = a2 v2. यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया छोटा है, मतलब यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ लिक्विड फ्लो विल बी हायर. सो ऑब्वियसली v2 इज ग्रेटर देन. अब फर्स्ट कंसेप्ट हम लोगों को फर्स्ट इक्वेशन v1 और v2 का मिलेगा. a1 v1 is equal to a2. This is equation 1, जहाँ पर एरिया ऑफ द फर्स्ट पॉइंट एंड एरिया ऑफ द सेकंड पॉइंट आर नोन टू अस. तो वेरिएबल क्या क्या है यहाँ पर? अरे एरिया मालूम है, बोले तो इसका डायमीटर मालूम है, तो पाई आर स्क्वायर करके हम लोग एरिया नहीं निकाल सकते हैं. तो a1 और a2 दोनों क्या बराबर? a1 और a2 दोनों पता है या पता नहीं? तो अगर पता है तो ये इक्वेशन में कितना वेरिएबल, दैट इज v1 एंड v2 एक इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं? नहीं, दो वेरिएबल है. सो वी नीड द सेकंड इक्वेशन एंड दैट इज बर्नौली's थ्योरम. p1 plus half rho v1 square plus rho g h1 is equal to p2 plus half rho v2 square plus rho g h2. अब देखो ये h1 और h2 जो है ये 1 और 2 पॉइंट का एलिवेशन होता है ना. एलिवेशन मतलब हाइट फ्रॉम अ रेफरेंस लेवल.
अब देखो दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल में है ना, तो इसलिए H1 और H2 यहाँ पर सेम है, they will get cancelled. H1 और H2 का values same, right? Their heights are equal. ताले can I say P1 plus half rho V1 square is equal to P2 plus half rho V2 square? ये इक्वेशन 2 है, यहाँ पर भी V1 और V2 दो वेरिएबल है, तो 2 इक्वेशंस 2 वेरिएबल सॉल्व कर लेंगे हम लोग। लेकिन एक प्रॉब्लम है, क्या P1 और P2 में हम लोगों को पता नहीं है, वो हम लोग निकाल सकते हैं कैसे? By knowing the level of liquid in these forms. लेकिन देखो मैंने लेवल्स जो है ना मार्क नहीं किया है, ये तुम लोगों को बताना है कि अगर V1 छोटा है V2 बड़ा है, मतलब यहाँ पर फ्लूइड फ्लो स्लो है और यहाँ पर फ्लूइड फ्लो फास्ट है, तो कहाँ पर लिक्विड का लेवल ज्यादा होगा और कहाँ पर लिक्विड का लेवल राइट, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर ज्यादा होगा, वेलोसिटी कम है ना। देखो ये इक्वेशन में V1 जो है ये छोटा है, V2 जो है वो, तो ऑब्वियसली P2 जो है वो और P1, तो क्या होगा यहाँ पर ज्यादा लिक्विड जम जाएगा, ज्यादा हाइट का लिक्विड जम जाएगा, मान लो कैपिटल H1 है और यहाँ पर लिक्विड का लेवल कम, ठीक है। तो हम लोगों को क्या पता है कि H1 डेप्थ पे लिक्विड का प्रेशर कैसे मेजर किया जाता है? फॉर्मूला क्या है? at any depth h rho g h rho g, राइट? हाँ है ना। सो ये P1 को हम लोग लिख सकते हैं कैपिटल H1 rho g प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, कैपिटल H2 rho g प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। याद रखना कैपिटल H और स्मॉल h सेम, कैपिटल H is just the height of liquid over here and small h is the elevations of the point 1 and 2। तो यहाँ पर देखो रो हम लोग कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं, तो इक्वेशन आएगा H1g प्लस हाफ H2g plus half V2 square. So this is your equation 2. अब देखो H1 H2 तो नोन है, हम लोगों को पता है यहाँ पर, और A1 A2 भी नोन है, so we can solve for V1 and V2 from equations 1 and 2. V1 and V2 can be solved. V1 and V2 can be solved. Is that clear? So this is called venturimeter, where by knowing the other quantities like the heights h1 and h2 and the areas a1 and a2, you can solve for the velocities v1 and v2. तो कोई भी जगह पे velocity obviously ये heights से चेंज हो जाएगा, ये heights का चेंज देख के हम लोगों को पता चल जाएगा कि velocity कितना है, कौन सा है। Clear? Venturimeter क्या होता है? हाँ तातड़ी को रही। अच्छा, this is the next topic we are doing lift. I just missed recording it. तुम लोग लिख लो तब तक. So lift in aeroplane is what when an aeroplane moves through the air. This is the cross section of the wings. Cross section of the wings मतलब क्या? ये मान लो एक एरोप्लेन है, ये मान लो एक एरोप्लेन है, तो ये एरोप्लेन का जो विंग्स होता है, ये विंग्स को अगर हम लोग क्रॉस सेक्ट करेंगे मतलब काटेंगे यहाँ से, तो ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया दिखेगा वही क्रॉस सेक्शनल एरिया मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है, ठीक है। दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द विंग्स। सो क्या होता है, वो ऐसे कर्व रहता है, तो जब वो एयर में से फ्लो करके जाता है, देन द लेयर ऑफ एयर मूविंग अबव इट एंड बिलो इट, they travel different distances. ये कर्व है, ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करता है, ये फ्लैट है, कम डिस्टेंस ट्रैवल करता है, बट इन द सेम टाइम, तो उसके कारण क्या होता है, the velocity at the upper portion is greater than the velocity at the lower portion. So if we apply the Bernoulli's theorem and say that upper and the lower portion of the wings are very close to each other, so that their heights are nearly equal, so this rho g h1 and rho g h2 they get cancelled. So what we have is P1 plus half rho V1 square is equal to P2 plus half rho V2 square. Since V1 is greater than V2, मतलब ऊपर वाला velocity नीचे वाला velocity से ज़्यादा है, that is why
P1 जो है वो कम होगा और P2 जो है वो ज्यादा होगा। सो ऊपर प्रेशर कम होगा और नीचे प्रेशर, एंड दैट क्रिएट्स अ लिफ्ट ऑन द विंग्स ऑफ द एरोप्लेन, जिसके बेसिस पे वो फ्लाई करके ऊपर जाता है। इज दैट क्लियर? याद रखना, जब इसका फ्लैप्स होता है ना, इसको जब ऊपर चढ़ना होता है तब वो फ्लैप्स को ऐसे ऊपर चढ़ा देता है, तो उससे क्या होता है, एयर यहाँ पर आके धक्का लग के और भी ऊपर जाना पड़ता है उससे, तो वहां पर क्या होता है, वो और भी जोर का प्रेशर क्रिएट करता है। एंड नहीं, इट क्रिएट्स बेसिकली इट क्रिएट्स अ टॉर्क। इस टॉर्क के कारण क्या होता है, वो ऊपर वाला डायरेक्शन में फ्लाई अप करता है, और जब उसको नीचे उतरना होता है इसको सीधा कर देता है, और ये फ्लूइड फ्लो का स्पीड का डिफरेंस कम हो जाता है, और लिफ्ट जो है वो कम हो जाता है और ग्रेजुअली वो नीचे उतर जाता है। ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंस, सी ये लिफ्ट कितना है कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग। मैंने बोला P2 इज ग्रेटर, राइट? सो P2 माइनस P1 इज इक्वल टू हाफ रो V1 स्क्वायर माइनस, राइट? तो अगर हम लोग को एयर वेलोसिटीज मालूम है, हम लोग प्रेशर डिफरेंस निकाल लेंगे। क्या P2 माइनस P1, तो V1 माइनस V2 होगा ना, उल्टा करके लिखा। So P2 minus P1 will give us the pressure difference. This multiplied by the area of the wings, surface area of the wings, will give you the uplift. So lift, force of lift is equal to P2 minus P1 into A, where A is area of wings. Area of wings. Yes, so that gives you the lift of the airplane. Okay, sir. Alright? Thank you, sir. अच्छा, pitot tube क्या होता है? Pitot tube is a device that is connected to the ship or a steamer or a speedboat, which measures the speed of these boats in water. कैसे मेजर करता है? अगर ये बोट जो है वो सामने वाला डायरेक्शन में जाएगा, तो यहाँ पर पानी का फ्लो कौन सा डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में। अब देखो, एक पोल जो है वो वर्टिकल है और एक ऐसे बेंड है, तो क्या होगा, यहाँ से जो पानी फ्लो करके निकल जाएगा, लेकिन यहाँ जो पानी अंदर घुसेगा वो यहाँ तक जाएगा ना। सो अगर मैंने दो पॉइंट लिया 1 and 2, 1 में वेलोसिटी रहेगा जो v है, लेकिन यहाँ पर v2 जो है वो क्यों, क्योंकि लिक्विड यहाँ पर जाके अटक जा रहा है ना, यहाँ से पास करके नहीं जा पा रहा है, तो कहाँ पर लिक्विड का लेवल ज्यादा राइज करेगा, बिकॉज यहाँ अटक जा रहा है ना लिक्विड, तो यहाँ पर वेलोसिटी सबसे कम हो रहा है। सो मान लो वेलोसिटी 2 में पानी यहाँ तक चढ़ रहा है और 1 में पानी यहाँ तक चढ़ रहा है। ऑलराइट, सो ये H2 है, कैपिटल H2, और ये कैपिटल H1 है। ओके, ये बर्नौली थ्योरम का H1 H2 नहीं है, नॉर्मल। ये लिक्विड जो है इसके अंदर वो स्टैटिक है, मतलब ये प्रेशर मेजर करने के लिए। So if we write the formula P1 plus half rho V1 square plus rho G is equal to P2 plus half rho V2 square plus rho G H2। देखो ये 1 और 2 पॉइंट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे होगा, तो हम लोग H1 H2 कैंसिल कर सकते हैं, और P1 जो है इट इज बिकॉज ऑफ दिस मच लिक्विड प्रेशर, सो दैट इज H1 rho G plus half rho v square। v1 is जाएगा, I'm writing v square, why? Because velocity at 1 is present as v, but velocity at 2 is 0, so this will be only P2, that is H2। so if I bring rho, cancel off rho from both sides, then v square comes out to be rho g, अच्छा 2gh2 minus, right, 2gh2 minus h1, so the velocity of this boat will be root over of 2gh2 minus h1, where h1 and h2 are the liquid columns in the two tubes, दो ट्यूब में लिक्विड कॉलम है। so यहाँ से ये वाला बहुत सिंपल सा एक मीटर के हिसाब से, मीटर के हेल्प लेके हम लोग स्पीड ऑफ द बोट इन वाटर निकाल सकते हैं। क्लियर? एंड द लास्ट एप्लीकेशन इज उसे क्या बोला जाता है जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, द स्विंगिंग ऑफ अ बॉल, उसका एक नाम है, क्या नाम है?
Magnus effect. Magnus. Magnus. So what is Magnus effect? You all have seen this. Whenever a ball moves in the forward direction as well as it rotates, then instead of going in a straight line, it bends along a specific direction. Why does this happen? When it moves in the forward direction, the air flows in the backward direction, right? So when the air is flowing in the backward direction, due to the spinning of the ball, this point and at this point the velocity of the air becomes different. यहाँ पर velocity of ball ज़्यादा हो जाता है because air current और ball opposite direction में rotate कर रहा है और यहाँ पर दोनों same direction में rotate कर रहा है तो यहाँ पर speed कम हो जाता है. So if I take this v1 and this is v2, then v1 is greater than v2. तो अब मुझे बताओ v1 अगर greater than v2 होगा तो p1 और p2 में कौन ज़्यादा होगा? p2 greater than p1. Yes. So यहाँ पर force ज़्यादा लगेगा. Sorry, इधर ये टर्न नहीं करेगा. Turning around this direction because इधर वाला force ज़्यादा होने से वो turn कर जाएगा. So that's it. This is what you call Magnus effect. इसे Magnus effect. Magnus effect. हाँ.